So sorry. So sorry. नहीं नहीं मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा. मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे. मैं शूटिंग कर रहा था हैप्पी न्यू ईयर के लिए फिल्म सिटी में, और थोड़ी देर हो गई सेट पे, और वहाँ से निकलते निकलते गोरेगांव से यहाँ पहुँचते पहुँचते आप तब तो जानते हैं कि हमारे रोड्स कितने अच्छे हैं. और तो मैं क्षमा चाहूँगा. ये सब टाइम पे थे. मैं थोड़ा लेट आया हूँ तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा. सॉरी. जाए. Okay, good evening, welcome. We're ready to answer any questions if you have any. And we're all here. Uday, Katrina, Vijay Krishna Acharya, हमारे director. He doesn't need any introduction. I'm Abhishek Bachchan, and we're here for the press conference of Dhoom 3, which releases on the 20th of December. और अगर आपके कोई सवाल हो, हम लोग हाजिर हैं. Yeah, good evening to all. This is Raj from media. It's for Amir Khan. What changes do you find in your life after a shoot of Dhoom 3? Sorry, I didn't hear properly. What changes do you find in your life after shoot of Dhoom 3? Yeah. You know, two changes. One is after the work of Dhoom 3 is over, I'm extremely stressed and nervous because now I have only the release to wait for. So that is a big change in my life. And the other change is that I'm missing all of them because we used to spend a lot of time together, and I was just complaining to Abhishek and to Katrina and to Uday that they've all gone on with their own lives and I want to spend time with them. The release is coming close. So they've all promised to be together. And 13th onwards, am I right? 13th onwards, we're going to chill together and kind of encourage each other before the release of the film. Yeah, good evening to all of you. Good evening. Vijay Shankar here. I'm from the media and also a classical dancer. Okay, that's wonderful. This is just a brief intro, otherwise you'll get bored. Well, could you tell us about your experience with tap dancing? You know, because I read about it. Yeah, it was, I had mentioned to Victor many months ago that tap is a kind of dance that I've always wanted to learn. Then a few months later he discussed with Adi, and then they said, hey, yaar, the title track that we are supposed to shoot on you, why don't you do the tap in that? So I was kind of taken aback and I said, okay, let me give it a shot. And in my head, you know, I always imagined tap to be what we've seen of Gene Kelly and Fred Astaire, you know, very light on the feet and very graceful. So in my head, I was thinking of that kind of tap. But when Adi selected the choreographer, which Tap Dogs is the company which has choreographed the Tap Dog song in Dhoom, their style is completely different. It's a very modern style of tap. It's very grungy, very strong power. There's a lot of emphasis on power and speed. So I got a bit of a shock when I saw that as well. I was like, I wasn't expecting this. But it was fun. I kind of threw myself into it, and I was in Sydney for a month training with them. And they were really patient with me and helpful. I'm not a very good dancer, I have to admit. I think if Hrithik would have done the song, it would have been much better. I think Shahid would have done a really great job. Prabhudeva or Govinda, you know, these are really good dancers. But you have a fine sense of rhythm, and rhythm is very important for tap dancing. Yeah. Now, how much time did it take for you to get the right rhythm? Well, you know, I'm not quite sure I still got it. But I just, you know, I had a month. I didn't have more than a month. I mean, I trained for 15 days in Bombay and then a month in Sydney, so I had 45 days of training. I would imagine that something like this, you know, learning any dance form, the minimum that you need to, time that you need to spend with it is 2 years before you can actually, you know, really get the dance. But I didn't have the luxury of the time, and I had to make do with the 45 days that I had, so I did the best I could. Thank you so much. Nice meeting all of you. Thank you. मेरा सवाल आप पांचों से है. आलोक फ्रॉम OFM वीडियो. सर सवाल ये कि धूम है तो क्या है और धूम नहीं है तो क्या है लाइफ में? आप कहाँ छुपे हैं आलोक जी? सर स्पीकर की तरफ आपके राइट में. अच्छा हाँ 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 पूछिए. लाइफ में धूम हो तो क्या है और धूम नहीं हो तो क्या है? आप पांचों प्लीज आंसर करिए. I think Abhishek is the answer there.
जी धूम हो तो अच्छी बात है, और ना हो तो इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमेशा से मेरी ज़िंदगी में धूम 1, धूम 2, अभी धूम 3 रही है। तो धूम तो हमेशा मची है मेरे जीवन में। धूम नहीं है तो फिर मजा नहीं है जिंदगी में। थोड़ी बहुत मस्ती धूम होना चाहिए हर आदमी की जिंदगी में, और धूम है तो क्या जवाब है? मैं बोल दूं? अब मतलब विक्टर साहब से नहीं पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा फाइनल। हाँ डायरेक्टर के पास। अब मेरे लिए धूम कुछ और मायने रखती हैं। जब धूम है तो मैं एक्टर हूँ, जब धूम नहीं है तो मैं एक्टर नहीं हूँ। बेस्ट आंसर, सुपर। अली के डायलॉग्स हमेशा सबसे बेस्ट होते हैं धूम में। If there's no Dhoom, I don't have the answer for that. But if there's Dhoom, for me the meaning of Dhoom is dance. And that's what this film has been for me, and I've loved it, and it's been the most amazing experience to be able to do these kind of songs. जब ये सब है और आप सब लोग हैं तो काफ़ी धूम है, और उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ धूम हमेशा मस्ती रहेगी रेगुलर इंटरवल्स। आमिर हाल ही में आमिर हाल ही में कुछ ही दिनों पहले आपके एक आर्टिकल पढ़ा था हिंदुस्तान टाइम्स में, जहाँ पे लिखा था कि आमिर को टेंशन आता है तो वो सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है, और फिलहाल आपने वो हैबिट फिर से अडेप्ट कर लिया है। तो कितनी सच है ये बात, और अगर कुछ ऐसा है तो मैं आप सभी से जो स्टेज पे है जानना चाहूँगा कि क्या आपको फिल्म रिलीज के पहले टेंशन आता है? अगर आता है तो स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? हाँ ये बात सही है कि मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया एक बार फिर, टेंशन में, धूम 3 की टेंशन में। अच्छी बात नहीं है और मैं खुश नहीं हूँ इससे, लेकिन इस वक्त क्या 2 साल से मैंने हर चीज़ इतनी कंट्रोल की है ना, डाइट और वर्कआउट, और इतना स्ट्रिक्ट 2 साल से मैं रहा हूँ, तो अब थोड़ा मुझे अपने आप को छूट देनी है। खूब खाना खा रहा हूँ मैं, बड़ा पाव, पाव भाजी, एकदम बड़ा पाव हो गया हूँ मैं अभी। और इसलिए सिगरेट भी चल रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द छोड़ भी दूंगा। मैंने तय किया है कि 31 दिसंबर को फिल्म के 10-11 दिन बाद मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, बड़ा पाव भी छोड़ दूंगा, फिर से डाइट पे आ जाऊंगा। उदय, अभिषेक, कटरीना, विक्टर, आप लोग के स्ट्रेस बस्टर्स क्या होते हैं? क्या आपको कभी टेंशन आता है जब फिल्म रिलीज के टाइम पे? मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है इस वक्त। सारा स्ट्रेस आई थिंक इस तरफ मैंने डिसाइड कर लिया कि इसके बाद मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो फॉर मी इट्स अ ग्रेट मोमेंट। अल्कोहल, सिगरेट सब छोड़ चुका हूँ मैं। वैसे सिगरेट पीता नहीं था, फिर भी वो भी छोड़ दिया। But apart from that, I have no stress. I'm very excited that the film is coming out and I'm in it with all these wonderful people. कटरीना, अभिषेक, अच्छा, हर सवाल हम पांचों को जवाब देंगे? हाँ, सभी है। बहुत लंबा चलने वाला भैया ये। 5 जन मिले एक साथ। segment करना है ना? हाँ। My stress buster, I like listening to music really loud and going on a drive. तो रोज शाम को काम के बाद म्यूजिक लगा के I go for a drive. कटरीना, आप नहीं कहना चाहेंगे कुछ? I can tell you what gives me the stress. What gives me the stress is I remember when we were shooting for the song Malam, and we were really working hard. I mean, it was hard work. And I said, you know, Amir, this is what we're putting all this work into it. And Amir said one thing to me. He said, yeah, I just hope that it shows. Because sometimes you think you're working really hard, and then people see it and they're like, yeah, well, it's okay. So for me, that goes over and over in my head, that I just hope all the work that's gone into it shows, and you know, it means something to everybody. And the way to de-stress myself, I haven't found out yet. If you have any tips, please give it to me because I really need them. अरे भैया, डायरेक्टर को तो आंसर करना था। Yeah, if I can't answer, then I feel very stressed. I used to think that I'm giving everybody stress, but now that the film has been taken and the copy is going to be coming out very soon, yeah, very generally, I have 2 daughters. If I chill with them, and that's a good stress buster for me. Or I see somebody else's film and then I start getting stressed. Okay, Amir sir, here.
last row. This question is especially to you. Till now, Three Idiots was supposed to be the highest top grosser in Bollywood. Now it was overpowered by Chennai Express. Do you have any kind of an expectation that Dhoom 3 should turn out to be the highest top grosser in the history of Bollywood? No, I have no such expectations, and nor am I thinking of that. I think what is most important to me, and the only thing that's important to me, is that when an audience buys a ticket, comes to the theatre, I just want them to have the greatest time that they've ever had. And I just want them to love the film, and that's what I'm concerned with. When I look back, I don't think audience is interested in numbers, and neither am I. When I look at the films that I loved, Mughal-e-Azam, Pyasa, I have absolutely no idea what their earnings were, and it doesn't matter to me. What matters to me is the way those films touched me and the kind of emotions they evoked in me, and that's what stays with us. So I think films is not about numbers. Films is about stories, emotions, characters, and that's how I like to look at it. Amir, right here. Yeah. Sakhi from Headlines Today and Aaj Tak. Hi. There have been a lot of stories and reports about marketing strategies and the promotional strategies of this movie, and the fact that you're not going very out and out aggressive with it. I have two questions about that. First one, every movie, if you look back of yours, it has had a very distinct sort of a different marketing strategy, a way to publicize it, which has garnered a lot of attention. Do you look into it personally? Do you take a lot of interest in it? How much how much does it matter for you for the promotional strategy to be so thought out? The second one, why this rationale of not going all out when every other film is just so promoted so much these days? Well, for me, marketing a film is very much part of the process of making a film. When you've invested so much in what you've done and you're keen for people to watch it, marketing is nothing but your invitation to the audience to come and experience what you've done. So, as someone who's been a part of the process of making of the film, this is part of that process for me, to invite people to watch the film, and that's what marketing means to me. How involved do I get? That depends on the producer and the director. If they want my involvement, I'm there. If they would prefer that I'm not involved, then I'm happy with that too, because that decision is always taken by the producer and the director. So whoever the producer and director feel should be part of the team that thinks about this or wants to contribute, that's what decision they take, and I'm happy to be part of that. What we've done for Dhoom, I just, like you said earlier, one of the things that is important is that the film should stand out, because there's so much clutter of so many forms of entertainment available to us today. Not only films, but so many other forms of entertainment available. So what you're doing should stand out. And I think that's precisely what we're doing. By doing less, we're standing out. That's what we believe. We believe that in this case, less is more. And if we want to do more, we have to have the patience and courage to do less. I think the main thing that we believe about this film, we're very happy with the way the film is turned out, and we are kind of pegging most of our promotion on the creative strength of the film. So the promos that you see is what we are really concentrating on. And when like just as an example, normally we give out full songs in all our films. This time we've only cut 30-second promos of the songs, and the purpose behind that is that we feel that we would like the audience to enjoy the song in its full glory for the first time when they watch the film on 20th of December. If I see a song 20 times, it's come again in the film. When I'm watching the film, I may not really be as interested in it. We don't want that feeling. When you're watching the film, we want you to be totally engrossed, even in the songs. So, for example, that's one of the things we did. But the essence of what we're doing is we are kind of allowing the creative material to talk for itself. And importantly, I think we try to respect the intelligence of the audience. I think the audience is a very intelligent audience. They know what they want, what they don't want. We don't have to go out there screaming to them, We should trust them and trust their intelligence. Amir, how much of the success of your past films do you attribute to such marketing strategies?
I think that no film can be successful without the film itself being good. And the marketing of the film, or for that matter, even the stars of the film, can only bring in the first weekend. So it helps to bring the first weekend, and beyond that, it's the film. So if people say Three Idiots is a big success and they attribute it to me, I think they're being inaccurate. Three Idiots is such a big success because of Raju Hirani and Abhijaat. And I think that I have contributed as an actor as much as Sharman has, as much as Maddie has, as much as Baman has. All the actors have worked together. Being a star, I may have managed to bring in a certain number of people in the very first few days. But beyond that, it has to be the film. Amir, hi, this is Ishan from News Express. आमिर, हाल ही में देखा गया आपके जो बहुत खास दोस्त है सलमान आपकी फिल्म को अपने शो पे प्रमोट करते हुए दिखाई दिए, तो क्या ये आपका आपस में पहले बैठ के बातचीत हो गई थी कि यार अब मेरी फिल्म भी प्रमोट कर देना शो पे, मैं आनी नहीं, ऐसे बात तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं एक्चुअली यशराज से घर लौट रहा था एक दिन गाड़ी में, और सलमान का कुछ टेक्स्ट आया, तो मैंने उसको दोबारा टेक्स्ट किया। मैंने बोला यार मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, मैं टोपी भेज रहा हूँ मेरी, तो किसी इवेंट में पहन लेना, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। तो उसने बोला टोपी भेज दे। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इवेंट में नहीं, वो बिग बॉस पे पहनने वाला है। आई हैड नो आइडिया दैट ही इज गोइंग टू डू दैट। आई थिंक दैट शोज हिज जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट एंड हिज वार्मथ एंड लव फॉर मी, कि धूम 3 उसकी फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है हमें हमारी मदद करने की, टू प्रमोट द फिल्म, एंड आई लव हिम फॉर दैट। आई लव हिम फॉर दैट। कैटरीना जी, ईशान, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इस फिल्म के लिए। और हाल ही में एक खबर भी आई, जब रणबीर कपूर और करीना कपूर एक शो में पहुंचे तो उन्होंने बताया करीना ने कि आप शादी कर रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सिस्टर इन लॉ बोला आपको। करीना एक्चुअली पूरे शो में आपको कभी वो कह रही थी शादी होगी तो आपके गाने गाएंगे, कभी बोल रही थी मैंने कपड़े बनवा लिए, तो पूरी तैयारी की बात करी थी और बार बार आपको सिस्टर इन लॉ कह रही थी। One at a time. Firstly, I'd like to say that I am not getting married. I am not engaged. I think that was said as a joke. Kareena and Ranbir are cousins, so everyone knows when you go on Coffee with Karan, you're meant to pull the other person's leg. You must have seen in so many previous episodes, people are saying, things about one another, and I don't think they're serious. I mean, these things are said in jest, so no, I'd like to clarify. I'll take your congratulations for the movie, but unfortunately I'm not getting married. There's no such thing like that. And the gentleman next to you, I'm sorry, I didn't understand what you said. Just slowly. Okay. लेकिन आमिर, आज ही यहाँ पे कॉफी विद करण का एक नया टीजर आउट हुआ है जहाँ पे अगले हफ्ते आप और किरण गाने वाली है, तो वहाँ पे आपने कहा कि रणबीर को तो मैं देख लूंगा। उसके लिए आप शो देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्यों मैंने ऐसे कहा। But Katrina, have you had a chance to watch the episode and maybe speak to them after that? What were your views on the episode? Over here. Did you watch the episode and what are your views? Sorry, was that for me? Yeah, that was for you. Have you had a chance to see the episode and talk to them about it? Did it take you by surprise? It didn't take me by surprise, because I'll tell you what happened. If you, maybe weeks ago, I think it had also come in the media, all of us were at Karan's house. We were just having a dinner, an evening out. And Kareena was talking about going on the show, and she told me that I'm gonna, purposely say these things, and I'm gonna pull everyone's leg. And she said, "Do you mind?" I said, "I have no problems with it." I thought it was very funny, and everyone keeps asking me. Apparently, Kareena says if she has to kiss somebody, it's gonna be me. So that was the bigger shock. I don't know about the marriage part, but for me, the bigger shock was the romance between me and Kareena, which is yet to come. That's the exciting part. मेरा imagination उड़ रहा है इस वक्त। करीना, just tell us कि शो में करीना किसी का भी नाम लेके रणबीर को छेड़ सकती थी, but why only you, your name? कहाँ से सवाल आ रहा है? हाँ, क्या सवाल था? कि सिर्फ शो में आपका ही नाम क्यों लिया गया? Why did she only take my name that she wanted to kiss me? No. Overall episode if we talk. You are getting married and उन्होंने गाने तैयार रखे हैं आपके सारे हिट नंबर्स पे वो परफॉर्म करेंगी, सिस्टर इन लॉ कहा आपको। I don't know. I'll have to ask her. Listen, see, they're cousins, right? So which means that obviously, and I know for a fact that
often have. I think that also came on the show. Someone told me where someone said that, you know, all the information comes from Kareena and then Ranveer tells everybody else. So, I mean, everyone was just pulling each other's leg, but I promise you, I assure you, there's no such thing like that, and it was said in jest. So. Katrina, there was one more statement made. एक second यार, you know we can't hear properly here. इसको turn करो ना please, क्यों घुमा दिया दोबारा? ये monitor तो आपका काम ही नहीं कर रहा है भैया. बस इतना ठीक है. हाँ. Sorry. Katrina, you said that every statement was made in jest and meant to be laughed at. Ranveer placed you ahead of Deepika and Priyanka in terms of acting. So do you think that statement was made by him out of jest, or is there any truth in that statement? What do you have to say? I think Ranveer just knows what's good for him. I think that was the reason for that statement. Would I like it to be true? I would love it to be true. I would love that people would think I am the greatest actress. Is that true? Well, I hope to be. Well, Ranveer believes so. Well, that's a compliment for me because I think he's an amazing actor. I mean, he really genuinely is, I think, one of the best actors. So I hope he believes that, and I hope it's true. Amir, one question for you. At a recent event, Shah Rukh said that you are one of the finest actors our country has seen. And he also made a statement that he's ready to act in action films as an anti-hero, and if offered the sequel of Doom, he wouldn't mind doing it. So, what do you have to say? Do you see him as good as you as an anti-hero in the sequel of Doom? Well, I think that's extremely warm and generous of Shah Rukh to say that, and I also have very high regard for his work. I think he's a wonderful actor, and of course, I mean, the next Doom that is made should. If Adi feels that Shah Rukh is the right actor for that, of course he should do that. And I think he'll do a great job. Yeah. Hi Abhishek. You guys will have to run after that. Hi Abhishek, left. Abhishek here. अभिषेक, पहला सवाल तो यही है कि धूम 3 का जो पहला प्रमोशन था तो आप मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो 2 प्रमोशन थे उससे गायब रहे, तो क्या वजह थी? और दूसरा सवाल ये है कि धूम सीरीज के अब तक के सबसे बेस्ट विलन साबित होने वाले हैं आमिर खान, आपको क्या लगता है? बीच में हम प्रमोशन में मुझे बुलाया गया, मैं हाजिर हो गया या अभी और क्या हो गया. दूसरी बात, I think it's ये actually Amir tried to put Uday and me in a fix परसों जब उन्होंने हमसे पूछा कि who's been your favorite villain of Doom so far. I feel every Doom is a different Doom, और अगर जब आप Doom 3 देखेंगे, I firmly feel, having been part of 1 and 2, that Doom 3 बहुत ही अलग है from 1 and 2. I'd like to believe that we've gone a few steps ahead. I've never believed the Amir's character or Hrithik's character या John का जो किरदार था to be the villains of Doom. अगर आप देखें, they all have very good reasons for doing what they're doing, and there's never any animosity. अगर आप Doom 1 का जो लास्ट शॉट है देखें, मैं उदय से कहता हूँ कि यार अगर ये जिंदा रहता तो दोस्त बन जाता. Doom 2 में ऋतिक और ऐश्वर्या से कहता हूँ कि संभल के रहना, I like you also, I'm letting you go, but be careful, because I like you. Doom 3 में मैं क्या बोलूँगा या क्या होगा ये तो आपको देखना पड़ेगा. But I've never looked upon them as villains, so it's very, I would not call them villains, I'd call them co-stars. I've enjoyed working with all of them. John और ऋतिक मेरे contemporaries हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. आमिर हमारे senior हैं. I can't say he's my buddy. That will be incorrect of me. There's a lot more respect and awe when he's concerned. But I've enjoyed working with all of them. इनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है मैंने, हम सब ने, और बहुत ही मजा आया इनके साथ काम करते हुए. But I think it will be unfair for me to choose just one. आमिर, मैं सुधा से आपसे एक क्वेश्चन है मेरा. आप हमेशा ही लड़कियों को अप्रिशिएट करते हैं, बेटियों को अप्रिशिएट करते हैं, और दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी काफ़ी चीज़ें जो है सामने आई हुई हैं लड़कियों को लेकर. तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके लिए बेटी कितनी महत्वपूर्ण है? इवन अभिषेक, आपकी भी बेटी है आराध्या, आप दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके लिए बेटियाँ कितनी महत्वपूर्ण? बहुत, आई थिंक कि मेरे लिए मेरी बेटी आयरा बहुत ही अजीज़ है, और मैं कोई फ़र्क नहीं देखता हूँ जुनैद में, आयरा में या आज़ाद में. जहाँ तक सामाजिक तौर पे जो हो रहा है कि हम बेटियों को, हम में से बहुत सारे लोग नहीं पसंद कर रहे हैं या कई वजहों से
सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन किया जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है और इसका समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है जो हम देख रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ रहा है इसकी वजह से। बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जिनके चूँकि ये प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज़ अगेंस्ट गर्ल घटता जा रहा है लड़कियों का, तो आगे जाके बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जिनको कभी जीवन साथी मिलना मुमकिन ही नहीं होगा। अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ऑडियो गया आपका? आ गया, हाँ आ गया, बोलो। ठीक है जी, जो कुछ भी आमिर ने अभी कहा मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी एक छोटी सी बिटिया है और फॉर मी शी इज़ माई प्राइड एंड जॉय, नथिंग कुड मेक मी हैप्पियर। और जैसे कि आमिर ने कहा और बहुत सही कहा, I don't think anybody of this generation, at least on this platform, I can speak for everybody if I may. I don't think anybody differentiates between a boy and a girl. Victor के दो बेटियां हैं. Amir has 3 kids, 2 of which are a boy, 1 a girl. I have 1 daughter, and we don't differentiate. I think Amir has spoken very well on the subject. जो कुछ भी इन्होंने कहा है, इनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ. बेटी से क्या घर में रौनक रहती है, लड़के बड़े शैतान होते हैं, घर में कम रहते हैं। और मैंने देखा है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। आप कभी अस्पताल में जाइए तो बूढ़े माँ बाप अगर बीमार हैं और अस्पताल में हैं तो उनकी देखभाल करने ज़्यादातर औरतें होती हैं, उनकी बेटियां वहाँ रहती हैं उनकी देखभाल करने। लड़के बिजी हैं काम में, पता नहीं, मैं नहीं कहता कि लड़कों को के जज्बात नहीं हैं, बट आई थिंक विमेन आर मच मोर इमोशनल एंड सेंसिटिव, आई फील दैट। हाय आमिर। हाय। अभी जब पिछली बार आपकी फिल्म आई थी तलाश, तो उस बार आपने मीडिया से कहा था कि आप कुछ ऐसा करने वाले कि मीडिया आपको ढूंढते रह जाएगी, जिस वजह से आप हज पर चले गए थे, हज की यात्रा पर। तो इस बार आप धूम 3 को लेकर किस तरह से धूम मचाने वाले हैं? उम्मीद है कि फिल्म जब रिलीज होगी 20 को तभी धूम मचेगी और यही हमारी उम्मीद है। तलाश कर मैंने ऐसे कहा था कि मैं कुछ गायब होने वाला हूँ। अच्छा, खैर मैं गायब तो नहीं हुआ था, मैं यही था। हाँ बट हाँ हज पे गया था मैं, हज पे गया था, दैट्स राइट। बट आई थिंक यू नो वी आर really banking on the creative material of the film to invite people in to see the film. आमिर और अभिषेक से मेरा सवाल है कि जब शूटिंग हो रही थी शिकागो में, सर आपके लेफ्ट में आ गया हूँ मैं। अच्छा, आप यहाँ से वहाँ क्यों घूम रहे हैं? तो उधर स्पीकर घुमा दिया था ना, तो मैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शूटिंग के दौरान आज़ाद भी थे वहाँ और खबरें थी कि आराध्या भी वहाँ गए थे। ये लोग कितना धूम मचा रहे थे पूरे सीक्वेंस को देख करके। दरअसल जब तक आराध्या आई थी तब तक आज़ाद निकल चुके थे किरण के साथ, तो वो मिल नहीं पाए उस वक्त। बट मुझे मौका मिला था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट आराध्या एंड शी इज अ रियली स्वीट लवली गर्ल। एंड सर आप अवार्ड सेरेमनीज में नहीं जाते, आदित्य प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आते, तो ये सब कब बदलेगा? आदित्य कब आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा, आदित्य चोपड़ा जी जी वो बुला रहे थे उनको, भैया भैया ऊपर ही होंगे। देखिए मुझे लगता है कि आदि जो है वो उनका मन नहीं लगता इन चीज़ों में, और क्यों हम लोग हंस रहे हैं? I think he wouldn't know how to answer the questions. Sorry? He wouldn't know how to answer the questions. Adi? Yeah. No, Adi gives fantastic answers. वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। Adi just doesn't want to be recognized. I don't think he likes people knowing his face too much, because his greatest enjoyment is to go every Friday and watch a film as a regular person in the audience, and he doesn't like it when people start knowing who he is, and I think that takes away the enjoyment, and that's... मैं अंडा फोड़ देता हूँ। आदित्य चोपड़ा is a rumor. He doesn't exist. It's just a rumor. Nobody knows what he looks like, who he is, where he is. It's Uday's alter ego. He's actually Aditya Chopra. तो जो भी सवाल है यही साइन करते हैं चेक पे, इसलिए मुझे पता चला है। मैंने कई फिल्में की हैं यशराज के लिए, तो आप इनसे सवाल पूछिए आदित्य के बारे में, ये है असली आदित्य चोपड़ा। ठीक है, he's a rumor. But I also feel that we should respect his privacy and his wishes. अगर वो नहीं चाहते तो हमें इस बात की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आलोक, कटरीना और मैं इंटरव्यूज करते हैं, अवार्ड शोज में जाते हैं, डांस करते हैं, अवार्ड लेते हैं, सब कुछ करते हैं, सो डोंट वरी, हम आ जाएंगे। हम दोनों के साथ गुजारा कर देना। ओके, थैंक यू। Hello Amir, this is Pooja from Gulistan News. I'm
आमिर, सलमान आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, कैटरीना आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो हम जानना चाहेंगे उनका बर्थडे आ रहा है, क्या कुछ आप लोगों ने कुछ उनके लिए सरप्राइज पार्टी वगैरह प्लान किया है या क्या विश देना चाहेंगे उन्हें? यार मुझे डेट्स कभी याद नहीं रहती, कब है सलमान की बर्थडे? 27 तारीख। 27 दिसंबर। दिसंबर। ओह क्योंकि 28 को किरण और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ तो अब मुझे याद आ रहा है। देखिए अभी आप लोग भी वो कर रहे हैं। ओह तो मेरा वो सही था ना। 27 दिसंबर। क्या प्लान करें यार, सोचता हूँ मैं, अभी तो कुछ प्लान नहीं किया मैंने। क्या विश देना चाहेंगे उन्हें? क्या विश करना चाहूँगा वो तो मैं उन्हीं को कर लूँगा, आपको क्यों बताऊँ मैं। कैटरीना आपका क्या प्लान है? आप किस तरह से? I will definitely wish him directly. I don't think this is the place to give the wish. ओके आमिर, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके फिटनेस को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, बहुत तारीफ की जा रही है और आप काफ़ी फिट भी दिख रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ऐसा पहली बार होगा कि इतने फिट एंड फाइन दादाजी लोगों को देखने मिलेंगे, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि अवंतिका बहुत ही जल्द आपके घर में एक नया मेहमान लेकर आने वाली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? शायद वो पहले इंसान होंगे जो इतने फिट एंड फाइन दादाजी बनेंगे। मैडम देखिए, ये तो ना तो इमरान के पिताजी हैं कि वो दादाजी बन जाए, और ये खबर मुझे पता नहीं है। मामा तो है ना? हाँ मामा तो दादा कहाँ से हुए? इमरान के बच्चे के दादा बनेंगे आप तो दादाजी तो इमरान के पिताजी बनेंगे ना? नहीं आमिर, आपसे हम नहीं मैं भी बन जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बड़ी खुशी है और हमें बड़ा इंतज़ार है, एक नन्हा सा बच्चा आएगा एक और हमारे परिवार में। क्या है इस expecting baby. So we're all very happy for both इमरान and अवंतिका, और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक फिटनेस का सवाल है, इस वक्त मैं बड़ा अनफिट हूँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं बहुत अपने आप को मैंने लेट गो किया हुआ है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, 2 जनवरी से मैं दोबारा एकदम लाइन पर लग जाऊँगा। अभी थोड़ा एंजॉय करने दो मुझे यार, बहुत मैंने मेहनत की है। अभिषेक अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि आपको बुलाया गया है तो आप आ गए हैं, तो लास्ट टाइम जो 2 इवेंट्स हुए थे, जो सॉन्ग लॉन्च हुआ था यहीं पर, तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया था? ऐसी खबरें आई थी। आपने बोला भी था कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे बुलाया ही नहीं गया। इनका फोन नहीं लग रहा था, उन्होंने बहुत कोशिश की थी। जी सॉन्ग लॉन्च आई डिडंट नो अबाउट इट, ये सही बात है, लेकिन मेरे 2 को आर्टिस्ट थे यहाँ, काफ़ी है ना? नहीं दरअसल मैं आपको समझाऊँ, अदी का एक प्लान है कि हर गाना कोई लॉन्च करेगा, और इस दफ़ा धूम में आई थिंक यू एंड उदय डोंट हैव अ सॉन्ग। थैंक्स। तो ये सवाल आपको विक्टर को पूछना चाहिए कि भैया हाँ विक्टर बताओ गाना क्यों नहीं है फिल्म? हम लोग इस फिल्म के गाने में क्यों नहीं है? हम लोग बहुत अच्छा नाचते हैं यार, धूम 1 में भी नाचे थे, धूम 2 में तो बहुत नाचे थे। Uday, I think we should protest. Give them all to me. I'm sorry. You can't even argue with that. Hello, Abhishek. On to the next one. Oh, thanks. अभिषेक जी, हमेशा धूप में आपके सामने आरोपी जो है या अपराधी जो स्टार होते हैं, तो जॉन को आप पकड़ चुके, ऋतिक को पकड़ चुके, आमिर जैसे सीनियर आदमी को पकड़ना कितना मुश्किल रहा, ये कितना आसान रहा? जी कितना मुश्किल रहा या आसान रहा, ये आप इनसे पूछें, ये तो किरदार लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। मज़ा बहुत आया, लेकिन भगाया बहुत इन्होंने, लेकिन मज़ा बहुत आया, इनके साथ काम करके मज़ा बहुत आया। और यही प्रार्थना करूँगा कि 20 तारीख को जब फिल्म रिलीज़ हो, हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, उन्हें भी फिल्म पसंद आए। मेरा मानना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि धूम 3 मुझे धूम 1 और धूम 2 से अलग लगता है। इसमें जज्बात बहुत हैं जो पिछले 2 धूम में शायद इतने नहीं थे, लेकिन इस बार मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आप लोग को फिल्म बहुत पसंद आएगी। कटरीना, जैसे कि पहले आप ही ने कहा, हाँ जी कटरीना जी, जैसे पहले आपने कहा कि शादी वादी कुछ नहीं होने वाली, तो क्या ये मान ले फाइनली कि रणवीर और कटरीना शादी नहीं करने वाले? फाइनल लॉक एकदम लॉक कर दिया। लॉक क्या लॉक क्या कर दे, लेकिन के का बाइट नहीं बनाया कभी, बाइट ठीक से बोल। अच्छा like that. I am not getting married to anyone right now.
In 10 years, in 20 years, in 30 years, ever, maybe, but not now. I'm so sorry. You look so like disappointed. You're like, you're He was right planning to there. marry you, that's why. One second. नहीं, one लेकिन second. आपको You're- तो खुश होना चाहिए। Yeah, you're so happy. Because अभी उसको भी चांस हो गया ना। अच्छा, आप अच्छा। पहचाना आपने हमें एकदम आपने बोला वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है तो वो लाइन में लग गए। So that's okay. Then it makes sense to me. भैया उम्मीद पे दुनिया कायम है। एग्जैक्टली उम्मीद पे दुनिया कायम है और अभिषेक और उदय आप लोगों को तो मौका नहीं मिला लेकिन अगर अभी एक मौका मिले कटरीना के साथ डांस करने का क्या कर लेंगे हम देखना चाहते हैं एक बार कटरीना बहुत हाँ ये बड़ा अच्छा आइडिया है मैंने तो डांस बहुत कर लिया और अब इन दोनों को हम लोग देखते हैं कि कैसे नाचते हैं यार कटरीना के साथ बिल्कुल सही I don't mind. I don't mind. Fun Republic is next door. I think the Dhoom ticket is being sold for $500. Is it? आप 500 के नोट दे दीजिए हम लोग खुशी से नाच लेंगे. Most of my dancing. Have you seen the promo of the song "Kamli"? Yes, of course I have. So I don't know if you know. Most of it involves rolling on the floor. Yeah. So हाँ तो कोई बात नहीं it might be a bit difficult. आप दिखा दो इनको थोड़ा हम लोग कपड़ा वपड़ा मार के साफ कर देंगे कोई टेंशन नहीं है That might make for some very odd pictures. So. I can't roll on the हाँ floor. that also we don't mind Next time maybe. ये डांसिंग वांसिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे या जी हाँ ज़रूर मैं जाके मिलूँगा और बहुत ही ख़ास दिन है हम सबके लिए मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यूसुफ साहब का और मुझे बड़ी खुशी है कल उनकी सालगिरह है सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने सालों से उन्होंने हमें इतना एंटरटेन किया इतना मनोरंजन दिया हमारा दिल बहलाया इतना कमाल का काम उन्होंने किया जिससे हम देख कर हम सीख सकते हैं और मैं दुआ करूँगा कि उनकी सेहत ऐसे ही अच्छी रहे और वो हमारे साथ हमेशा रहे अभिषेक आप भी ऐड करना चाहेंगे यूसुफ साहब के लिए उदय एंड कटरीना जी ये तो छोटी मुँह बड़ी बात हुई दिलीप साहब तो हम सब के लिए एक आदर्श है मेरा मानना है कि और मेरे जो सबसे फेवरेट एक्टर है वो है डैड और उनके सबसे फेवरेट एक्टर है दिलीप साहब सो that says it all. I wish him a very happy and most importantly a healthy year to come. Yeah, I wish him the same. A very, very happy birthday. He's actually been a very close friend of my father's. And I've heard a lot of stories about him. वो मेरे डैड को जवान बुलाते थे. So I've heard very, very nice things. I would always wish him all the best. Yes, for sure. Question to Amit. Wish him the most amazing birthday. I've actually met him twice at Joggers Park. He was taking his rounds and he's such a lovely person and it's a great honor to meet him and I wish him the most amazing year ever and all the happiness. Hello. My question is to Uday. My question is to Uday. Hi everyone. Tell me your experience after doing Doom 1, Doom 2 and Doom 3. I just want to know like how's your entire experience with Mr. Perfectionist and Katrina since you are working with them for the first time. Actually, She doesn't mean me, she means Amir. Because you already worked with Abhishek, that's what. She didn't get the joke, it's okay. So I've actually had not that many scenes in the movie with them, but we had a lot of fun out of the shooting experience. We had Amir used to host a lot of parties, especially when we were shooting in Chicago, and we would all join in those parties. I didn't see Katrina there. Uday, you used to come for those parties? I came for one. Amir, I don't remember him anyway. I came He used for to one. go to his room and sleep And we used to then try. you and I used to go and knock on his door don't you remember Yeah, so you never came Uday. So that's how it was. Tell me the funniest moment you guys have done on the set of Doom. This is currently one of the funniest, man. Seriously, nobody is bothering to inform you about everything or what? Like they are doing parties, they are doing. नहीं इन्हें बताते थे कि आते नहीं है. मैं जरा जल्दी सो जाता हूँ. ये लोग जरा मेरी पार्टी जरा 6 बजे से शुरू होती है. इन लोगों की पार्टी 6 बजे खत्म हो जाती है. Uday, hi. Okay, so in the first movie you didn't get Isha Deol. In the second you didn't get Bipasha Basu. In the third, finally do we see you with someone? Actually, he got Bipasha in part 2. He called me back, so technically exactly. Yeah, left but her. the idea is that if I get somebody, then there's no more left to get. So I guess that's how we keep it for Ali, so that he always has somebody to get
in part 4, part 5, and so on. Hello. Hello. My question is to Mr. Perfectionist. I have Amir Khan. हाँ जी पूछिए. I have seen a making of Lagan. So like your marketing strategy and how you have related to Doom 3. Lagan, like it was like perfect, like each and every आप बहुत detail में गए थे. And how would you relate it to Doom 3? I think we're doing what is right for Doom 3. So what you see of us in the marketing is what we planned for Doom 3. And I think that we're pretty much on the right track here. Yeah. You know, the only thing I actually want to say is that the one thing I'm really going to miss, and I really feel sad and I regret, is Yashji won't be with us to see the film, because he was there when the film started. And I was talking to Victor and Adi the other day, and that's something that I really wish he would have been here to see the film. And I would have loved to see his reaction to the film. Yeah, same here. But I somehow feel, I don't know, maybe it's superstition, but I just feel he's still here. I think he'll still see the film with us. Question to Ahmed is actually, I'll tell you a small, very nice anecdote which I hold very dear to me and especially the Dhoom franchise. Uday and I have been childhood friends, and obviously our fathers have known each other for a very long time. And I remember it was, if I'm not mistaken, in June 2004 when the teaser of Dhoom came out. And the first person to see the teaser of Dhoom was Dad. And I remember Yash uncle called him and he said, Papa ji, kya kar rahe hain aap? Mere saath chaliye. They got into a car, they drove to Ad Labs in Sun City. And both of them sat and said, ye picture hum log ne banayi, dono bete bahut achhe lag rahe hain. And then when Dhoom 2's teaser came out, Yash uncle showed the first teaser to my dad. My dad was the first person. And what was so nice was, even when Dhoom 3 was done and Victor was there, Adi went and called my father. He was shooting for KBC next door. And he said, Amit uncle, I want to show you the first. I want you to be the first person to see the trailer. That's always been something that's very close to me. And I totally agree with Uday. I think he's here. Yeah. He's here. He's going to see the film. Last two questions. Question to Ahmed. Yeah. Salman has already promoted your look in Big Boss. How are you planning to promote his Jai Ho look? Well, I hadn't thought about that yet, but I definitely would like to do everything that I can to help him promote the film. And the thing about Salman is I don't know whether I even need to do that. He's such a powerhouse of a star. But nevertheless, I'm going to be with him every step, and whatever he needs done would be done. Yeah. Katrina? Hi. Here, last row. Katrina, here. Katrina, in the month of September, Ranveer had made a statement. He said that, Katrina is a very special person in my life and I'm ready to give my life for her. What I want to know is, do you share the same feelings for Ranveer as well? ऐसे बोला था? Yeah. Confirm नहीं हुआ? Sir, internet पे है sir. Bombay Times. Bombay Times. Is that the reason why you said that? अच्छा जवाब दीजिए भैया. I will give my life for anyone who's in need, and who's a dear friend. The cast of Dhoom 3 is in great need. So can we include? If that is what you want, I will give it to you. So can we include Ranveer in that needy person? If Ranveer is ever in need, I will definitely be there. Okay, Katrina, जैसा कि और दो चार पूछ ले यार, मजा आ रहा है. दोबारा ये सवाल Katrina, जैसा कि करीना ने भी कहा कि उन्होंने गाने सारे सोच लिए हैं रणवीर की शादी में कौन से गानों पे परफॉर्म करेंगी आपके सारे हिट नंबर्स पे. So आपने कहा कि आप तो 10-20 साल तक शादी करने ही वाली हैं. So can we just ask you कि आपने सोचा है as रणवीर is your very good friend कि आप उनकी शादी में कौन से गानों पे परफॉर्म करेंगी? यार आप लोग बड़ा मीन ऐसे सवाल पूछते हो यार.
अच्छा नहीं है यार, ऐसे नहीं करो। If that opportunity in life ever presents itself and for some reason I am dancing at Ranveer's wedding, what would be the appropriate song? Give me a name. दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। मेरे पास कई आइडियाज आ रहे हैं लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत पिटूंगा उसके बाद, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। Besharam. I'll dance at Besharam at his wedding. I think that's. If not you, who you think Ranveer should get married to? In Bollywood. मुझसे पूछना? Sir, please take over. रणबीर को किससे शादी करनी चाहिए? मुझसे पूछना। यार कल तक तो आप सलमान के बारे में पूछते रहते थे, अब रणबीर के बारे में पूछ रहे हैं। मैं कोई मैरिज ब्यूरो हूँ? सबकी शादी में अरेंज कर रहा हूँ। हद हो गई यार। Ranveer should marry who he wants to marry. Hopefully that person, both of them will want to marry each other, and I hope that everyone's happy and everyone gets married when they want to get married. But Amir, the last press conference you said that you would like to see Salman and Katrina together. Why not Ranveer and Katrina? This is getting very confusing. I like to see everyone together here. Alright, thank you very much. अच्छा, आप लोग मेरे शादी के बारे में क्यों नहीं पूछते? अभी 3 बाकी है मेरी भैया। हाँ? अरे यार। Thank you very much. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Please pray for us and hope that you like the film. Thank you.